Okay. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Good evening. Okay, so welcome to the first lecture of cell structure and function, that is from class 8. Okay, and that is a very interesting chapter, you can say, and means we will have more informations about it very soon. Okay. तो देखो, अगर हम बात करें हमारे सेल की, तो cell is what? Cell is the basic unit of life. Basic unit of life. Or we call it the fundamental unit of life. Or we call it the structural and functional unit of life. Okay. Now, ऐसे क्यों कहते हैं सेल को? क्योंकि हम ये जानते हैं, हम ये देखते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, all these organisms are made of cells, because cells are only found in the living organism, and they are seen to have life in them. इनको इनमें लाइफ दिखती है. They have the life in them, and these have this special structure called cell, which are not seen in non-living things, जो कि आपको non-living thing में नहीं दिखता है. देखिए, अगर आपके सामने लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, अगर आप इसको विजुअलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली टेबल अगर वुड की बनी है तो वुड इज फ्रॉम द लिविंग सोर्स, दैट विल बी हैविंग सेल. But if we are talking about plastics, we are talking about laptops, we are talking about bulbs, those are the living things, non-living things, sorry. So उनके अंदर हमें सेल नहीं दिखाई देता, और हम ये देखते हैं कि उनके अंदर लाइफ भी नहीं दिखती है. लेकिन जैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सेल दिखाई देता है और उनके अंदर लाइफ भी दिखाई देती है. Means there is some association, or you can say the linking between the cell and the life. Getting my point? Oh, Juveria has also joined. Very good. Juveria, have you reached? Means where? कैसे? Means where you have reached? Saudi Arab, or means you were traveling somewhere, na? Oh. Means you have gone, you have reached, settled, and doing the class. Very good, excellent. So what's the time over there? Means at what time from there you are joining? 4 is there. Is it comfortable for you? Any issues? Okay, very good. Good. So the thing is, if we talk about, so that's why we see cell is that unit. Okay. Showing only 2 participants? Yes. No, it's showing on my side. It's showing, okay?
So the thing is, cell is that unit, and it is the basic unit. Means if any organism will be having what? A life. So that cell is required. I'm just explaining in a very simple way. इस सेल, ये जो सेल है, ये एकदम बेसिक यूनिट है जहां से लाइफ स्टार्ट होती है. और ये सेल अगर एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो दिस ऑर्गेनिज्म विल बी अ सेल, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. तो जैसा कि हम अमीबा में देख पाते हैं कि ये अमीबा लिविंग है and it is made of one cell, and if this component, the cell, this unit is destroyed, then this amoeba dies. That means that cell is responsible for life. That cell is giving a life. And if we talk about us, for example, now that is multicellular organisms. Obviously, we are also made up of many cells, trillions of cells. And those cells in combination is giving us or providing us what? A life. So that's why we call cell as a basic unit of life. Means this is the unit from where the life starts. Or we can call it the fundamental unit of life. Okay, and the next one, that is the structural and functional. These are very important words. How? Let us understand this. Now, when we see a wall around us, yeah, in our body, cells die too. बॉडी में सेल्स मरते हैं, नए सेल्स बनते हैं. Okay, for example, we are taking an example of a wall. Now, as this wall is made of bricks, what you will call? You will call these bricks the basic unit of wall, ना? क्योंकि ये एक एक ब्रिक मिलके इस वॉल को बना रही है. Getting my point? Means this brick is forming the structure of the wall. This brick is forming the structure of the wall. In the similar way, the cell is providing the structure to the organism. जैसे ये वॉल, दीवार ब्रिक की बनी है, उसी तरह एक ऑर्गेनिज्म भी सेल्स का बना है. The structure of the organism is due to the structure of the cell. Means we can call it the structure of the organism is due to the structure of the cell. That's why we call cell the structural unit of life. Understood this point? Why cell is called the structural unit of life? Okay. Now coming to the functional part. Why cell is called the functional unit? I'm just asking you, putting forward one question for you. How you are able to see anything? You are seeing me, you are seeing laptop or tablet or mobile right now, watching the class, watching the live class. How you are doing it? How you are able to see? कैसे देख पा रहे हो? Yes, eyes, of course. Muhaiminика, eyes, of course. Varia.
विद हेल्प ऑफ आइज, गुड, ठीक है। आइज की वजह से हम देख पा रहे हैं, ओके, आइज की वजह से हम देख पा रहे हैं। आइज क्या है? ऑर्गन है, यानी आइज की वजह से हम देख पा रहे हैं, ये आई का फंक्शन है, राइट? एम आई राइट? ठीक है, यानी ये आई फंक्शन कर पा रहा है जो कि है देखना, और आई एक ऑर्गन है। नाउ ये जो आईज है ये किसके बने हैं? टिश्यूज के बने हैं। ये टिश्यूज जो है ये किसके बने हैं? सेल्स के बने हैं। मींस अगर ये ऑर्गन फंक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका टिश्यू फंक्शन कर रहा है, और जाहिर सी बात है इसका सेल फंक्शन कर रहा है। अगर ये सेल फंक्शन नहीं करेगा तो टिश्यू डैमेज होगा, और आई भी फंक्शन नहीं करेगी और हम देख भी नहीं पाएंगे। सो व्हाट रिलेशन वी आर गेटिंग ओवर हियर? मींस the cell is performing the function, then this organ is performing the function. In the similar way, the organ system is performing the function. In the similar way, the organism is performing the function. So that's why we can say the function of the organism is due to the function is due to the function of the cell. Is due to the function of the cell. Getting my point? So that's why we call cell the structural and functional unit of life. अगर ये सेल होगा तभी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर ये सेल फंक्शनल होगा तभी ऑर्गेनिज्म फंक्शनल होगा। Okay, so this was the introduction of this topic, that is cell structure and function. यहां तक कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो तो बताइए चैट बॉक्स में। I'm feeling very thirsty today. I think Mohammed is typing something. Okay, nothing. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now coming to the discovery. अच्छा, अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो जाहिर सी बात है सेल ऐसे तो नहीं दिखता है, इतनी आसानी से नहीं दिखता है, या फिर टहल ले, या हमारी आंखें इतनी मैग्नीफाइड हो कि सेल्स को हर जगह देख रही हूं। हाँ, लेकिन हम सेल को देख भी पाते हैं। एनी एग्जाम्पल? बहुत आसानी से, रोजाना, डेली बेसिस। ओह, सेल। माइक्रोस्कोप रोजाना कहां देखते हो? मैसेज, हाँ भाई, बताएं बताएं बताएं। डेली बेसिस, मोबाइल कैमरा जूम। मोबाइल कैमरा सेल है। ओह यस, यूएरिया। मोहिमिन तो बस रोजाना रोजाना, डेली बेसिस इन द किचन। नहीं नहीं, अंदाजा लगा पा रहे हो? क्यों भाई? डोंट नो।
अरे एग, ओ यस मोहिमिन, आपका क्या ख्याल है? Egg is a cell. How is it connected with the egg? The largest cell. That is ostrich egg. Egg is a cell. Largest cell. Largest animal cell, you can call it rather. That is ostrich egg. You remember or not? ये तो छोटे में पढ़ाया जाता है जीके वीके में. That I can cover it some other day. Okay. This is your homework. Okay. चलो, तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो देखो, सेल्स जनरली हमें दिखते नहीं, हम आमतौर से सेल्स को नहीं देख पाते हैं. ठीक है, तो वी नीड अ टूल, और इसी टूल की वजह से, इसी टूल के इन्वेंशन की वजह से हम सेल को देख पाए, मतलब साइंटिस्ट सेल को देख पाए. ओके, और ये टूल क्या है, बता सकता है कोई? Yes, that is microscope. You know who invented it? Inventors. That is Zacharias Janssen. He was a Dutch. Okay, he invented the microscope, means not the complicated one that we have these days. Those are the modified versions. But the earlier means simply microscopes. What are? These are simply the combination of lenses that produces the magnified image. So the thing is, the microscope was invented, and those were very simple, means that was made by different combination of lenses. And in 1665, Robert Hooke, he had the microscope. No, Mohammed. Robert Hooke, he discovered cell, and he discovered cell, Robert Hooke, and he used the microscope to see the cell. He modified according to his study, for his study, and saw the first cell. That's why we say who discovered the cell. That starts with the Robert Hooke. Now confusion is clear. Confusion is clear or not? No, he invented microscope. There is a difference between invention and discovery. Yes,
Yeah. So microscope was invented. Microscope was not invented to see only cell. This tool was invented that was used by the biologist to see the cells. And the first cell was discovered by Robert Hooke. And he made the discovery. He first see the dead cell. What he saw? The dead cell. Okay, means those were means you were having the honeycomb like a structure like this. That cell can we find anywhere? In the plants, there are many dead cells present. In your body, dead cells are formed. They are waved off. Okay, so he observed first the dead cell. He observed what? The dead cell, and that was having what? The honeycomb like structure. Means these are what? The cell. This is one cell, this is second, this is third, this is fourth. Means what he observed? He observed the cork tissues. जो पेड़ की छाल होती है ना, पेड़ की जो कवरिंग होती है, जो छाल होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसको उसने स्लाइस किया, बहुत ही फाइन स्लाइसिंग की, और उसके बाद उसने ऑब्जर्व किया ये कॉर्क टिश्यूज, जिसमें उसको सेल के स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखाई दिए. और ऑफ व्हाट ट्री? दैट इज ओक ट्री. किस ट्री का? ओक ट्री से. ओके, और फिर उसने टर्म दिया इसको सेल्यूलर. सेल्यूलर मींस अ लिटिल रूम. Cellular means a little room, and from there we get the term that is cell. Got the point? तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया which was having honeycomb like structure, and that was obtained from oak tree, cork tissues of oak tree, and he called them cellular. That is the little room. That means the little room. And from there we got the term that is the cell. उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई मींस सेल की फील्ड में, और आप ये कह सकते हैं जैसे एवी ल्यूवेनहीक, okay, A.V. Leeuwenhoek, he observed in 1674. He observed the first living cell. He observed what? The first living cell, as you can say. Dead cell was observed by, यानी रॉबर्ट हुक ने डेड सेल ऑब्जर्व किया था. और सबसे पहला लिविंग सेल किसने ऑब्जर्व किया था? दैट वाज एवी ल्यूवेनहीक. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन in 1831 he discovered, yes, cork, C-O-R-K. Okay, he discovered nucleus of the cell. That is Robert Brown. Getting my point? यहां तक कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए. Same name? What same name? हाँ, अच्छा. यस, रॉबर्ट. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मींस
जितनी भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं. ओके, वन इज द यूनिसेलुलर, मीन्स दैट इज मेड ऑफ single cell only. Okay, that is made of single cell only. For example, like amoeba, paramecium, bacteria, yeast, etc. ये सब क्या है? Single cell, that is unicellular organism. And one is what? The multicellular organism, means the organisms which are made of multiple cells. For example, fungus, plants, and animals that we have. Okay. तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, जो सिंगल सेल के हैं वो तो है, लेकिन अगर मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स को भी देखा जाए तो क्या ये जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या इन सब के अंदर सेल का नंबर सेम रहता है या डिफरेंट? सेल का साइज सेम रहता है या डिफरेंट? सेल का शेप सेम रहता है या डिफरेंट? तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तरह तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर सेल नंबर, सेल साइज, सेल शेप, ये सेम होता है या डिफरेंट डिफरेंट होता है? यस, डिफरेंट होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल नंबर की, वेरी गुड, सेल नंबर की. ओके, तो किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है, किसी में कोई 1000 का बना होता है, कोई 10,000 का, कोई 1 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई बिलियंस, कोई ट्रिलियंस. तो सेल का नंबर जो है वो वेरी करता है, मींस इट वेरीज, इट वेरीज. ओके, सेल नंबर वेरीज. अब अगर हम सेल साइज की बात करें, इट ऑल्सो वेरीज. इट ऑल्सो वेरीज. सेल का साइज वेरी करेगा. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा. Okay, that is galli-septicum. This is also known as PPLO. That means pleuro pneumonia like organism. It is having a size of 0.1 micrometer only, or 0.1 micron. See, 1 micron is equal to 1 micrometer. 1 micron is equal to 1 micrometer. And 1 micrometer is equal to 10 to the power minus 6 meter. So this is the smallest organism. If we talk about the organism, that is mycoplasma, which is also known as PPLO. इसी तरह egg of ostrich, that is about 170 mm into 135 mm.
ओके, रेड ब्लड सेल that is about 7 micrometer. Getting my point? Getting my point? इसी तरह nerve cell, it can be of, means longer than 1 meter. It can be longer than 1 meter. तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि सेल का जो साइज होगा दैट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इसकी अपनी एक रेंज होती है. इसी तरह एसिटाबुलेरिया, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड एन एल्गी, it is a kind of plant. Okay, and that is about 10 centimeter in length. How much? एक सेल इसका कितना 10 सेंटीमीटर लंबा तक होता है. ओके, तो यहां से हमें यह पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म है इनका जो साइज है वो भी वेरी करता है. नाउ कमिंग टू द सेल शेप. Okay, so cell shape also, it also varies, and it depends on the function of the cell. Function of the cell. It depends on the function of the cell. कैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से उसका शेप होगा. जैसे अगर आप आरबीसी की बात करें तो ये कैसा होता है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप. मसल सेल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप होती है, मींस सिलेंड्रिकल शेप की होती है ऐसे. स्मूथ मसल स्पिंडल शेप की होती है लाइक दिस. ओके, बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं. कुछ एपिथेलियल सेल्स, यानी एपिथेलियल सेल्स जनरली कवरिंग का काम करते हैं. जैसे हमारी बॉडी को कवर कर रहे हैं, ऑर्गन्स को कवर कर रहे हैं, तो वो फ्लैट शेप भी होते हैं, क्यूबॉइडल शेप भी होते हैं, कॉलमनर शेप भी होते हैं. ओके, मींस दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स. अगर बात करें अमीबा की, इट इज हैविंग इर्रेगुलर शेप, इसका कोई शेप ही नहीं होता. इट इज हैविंग व्हाट, इर्रेगुलर शेप. पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो सेल्स हैं उनका शेप भी वेरी करता है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सेल्स हैं उनकी बॉडी, जैसे हमारे अंदर वी हैव आई, वी हैव स्टमक, वी हैव इंटेस्टाइन्स, वी हैव स्किन, वी हैव डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन. So all those cells are having different shapes. Why? It depends on the function. अगर ये आरबीसी डिस्क शेप का नहीं होता, रेड ब्लड सेल डिस्क शेप का नहीं होता, तो ये ब्लड में फ्लो कैसे करता? अगर ये लंबा लंबा सेल होता तो फिर ये फ्लो कैसे करता? फ्लो ही नहीं कर पाता ना. नर्व सेल है, नर्व सेल ये कैसा होता है? ब्रांच्ड. इट्स अ ब्रांच्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर. We have also tube-like structures. अब नर्व सेल इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरी करने हैं फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट, तो इसको ब्रांच होना पड़ेगा, इलोंगेटेड होना पड़ेगा, लंबा होना पड़ेगा, तभी तो कैरी करेगा. तो यहां से हमें क्या पता चलता है, आज हमने क्या सीखा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल का नंबर, शेप और साइज ये वेरी करता है. इट्स नॉट सेम इन ऑल. और सेल का नंबर
और यू कैन से द शेप और यू कैन से द साइज, डज नॉट डिपेंड द साइज। ऐसा भी नहीं है कि हाथी है तो उसका सेल बड़े बड़े होंगे, चूहा है तो उसके सेल छोटे छोटे होंगे, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के शेप पे उसके सेल का साइज डिपेंड नहीं करेगा। पॉइंट समझ में आया? तो आज यहां पे इसको फिनिश करते हैं, कल इसी के आगे इसको बढ़ाएंगे चैप्टर को। और क्विज जाता है, आपको पता है, तो जाहिर सी बात है तीनों क्लासेस का क्विज 8, 9, 10। अब व्हाट अबाउट सेल्स, ये किसके अंदर होता है? आरबीसी किसके अंदर होता है? हमारे अंदर भी तो होता है। एपिथेलियल सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, तो यहां पे अब क्विज जाएगा। जाहिर सी बात है तीनों क्लासेस का क्विज प्रिपेयर करना है। रात में 11 बजे इंडिया के, रात में 11 बजे तक का टाइम होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा वहां पे किस टाइम पे फिनिश होगा। क्विज का टाइम इंडिया के 11 बजे फिनिश टाइम होता है। ओके, तो अभी यहां पे 11 बजने में 8 यानी कि 3.5 घंटा है। तो जब आपको क्विज का लिंक शेयर होगा तो इसका मतलब ये हो गया 11 बजे, तो दुबई में दैट विल बी 9:30 पे फिनिश होगा या रिड्यूस, बिकॉज बेटा लेट हो जा रहा है ना मुझे स्कूल से, और फिर और ज्यादा मैं डिले करूंगा तो दैट विल गेट इनटू, देन हाउ विल आई डू ऑल माय वर्क। ओके, ड्यू टू विंटर्स ये सारी चीजें विंटर में हमें झेलनी होती है, और विंटर में हमेशा, तो मैं ये कह रहा था क्विज आपको जाएगा तो दुबई में आई थिंक दैट विल बी इंडिया के 11 बजे, तो दैट मीन्स 9:30 तक एंड करेगा। और सऊदी अरब में कितना, 2.5 घंटे का फर्क है ना, तो 11, 10, 9 यानी 8:30, यस 8:30 पे एंड करेगा। ठीक है, चलो फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, वेट फॉर द क्विज लिंक इन द अजीजा टीचिंग ऐप, जस्ट प्ले इट, जस्ट टेक योर नॉलेज। मिलते हैं कल। ओके, अस्सलाम वालेकुम।